province of Sindh in Pakistan was once the main port on the Indus during the time of Alexander the Great. Today, despite having a rich heritage, it's home to one of the most deprived communities, where 25% of agricultural land and 35% of livestock were damaged by the floods in 2010. In the area, the majority of the population depends on fishing, livestock and land resources. But it's heart-wrenching to note that livestock percentages have been decreasing every year, and cultivable land is constantly being devoured by sea intrusion. मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं इस गांव नबी बख्श थईम का रहने वाला हूं। हमारी यूनियन काउंसिल कोठी जो है वो समंदर के बहुत नज़दीक है और यहाँ पर अभी समंदर जो है ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसका बहुत बड़ा सबब ये है कि सिंधु दरिया में जो है ना मीठा पानी रोका हुआ है और सिंधु दरिया में कम से कम 1 लाख क्यूसेक पानी जो है ना रोज़ाना के हिसाब से छोड़ा जाए ताकि ये जो समंदर का पानी आगे बढ़ रहा है वो पीछे जाए। 2010 का जो फ्लड आया था उसमें जो है ना हमारे ये जो एरिया थी तो पूरा जो पानी आ रहा था सिंधु दरिया का तो उसका जो है ना गुज़र इसी एरिया से हुआ था। तो इसमें जो है ना हमारे पूरी की पूरी एग्रीकल्चर तबाह हो गई थी और इसमें जो है ना वो बहुत सारे घर भी जो तबाह हो गए थे। असां वटि जेका असां बोड आई आहे तंहिं विच में असांजा घर तबाह थिया, माल लुड़ी विया, असांजो को बि काफ़ी नुक़सानु थी वियो, असांजी जॻह ते किथे बि बचियो न बची सघियो। Devastating floods for 2 consecutive years left behind a land fertile for problems and lives badly shattered. Short-term goals of rescue and relief were fulfilled through emergency operations, but the long-term objectives of rehabilitating lives required a sustained effort for enhancing community resilience and adaptation to climate change. Islamic Relief Pakistan, already active in a number of geographical areas for relief operations, shifted its focus to multi-sectoral interventions under its Sustainable Initiative for Resilience and Transformation, or SIRAT, in the district of Sujaul. The SIRAT project endeavoured towards transforming lives in light of the needs identified by communities, as well as field assessment and impact analysis. Participatory reflection and action approach not only provided a platform for local people to express themselves, but also helped Islamic Relief Pakistan identify the most urgent and genuine needs of the communities. मुंहिंजो नालो रमज़ान ज़ात जत ॻोठ शेरवां जत यूनियन गुलवंत ॿारण। ही असां वटि पहिरीं ॼाण कोन हुई। जीअं हिकिड़ी इस्लामिक रिलीफ आहे उन्हनि असांखे हिकिड़ी तंज़ीम ठाहे ऐं उन ते असांखे सिखिया ॾिनऊं, ट्रेनिंग करायूं। उन खां पोइ असांखे इहो सुधारो आयो त असीं जेका तंज़ीम ठाहियूं उन्हनि मंझि असां हिकिड़ी तंज़ीम ठाहे पैसनि VC खोली। उन जे VC जे आधार ते असां पंहिंजो स्कूल खोलारायो उन बचत मां, जंहिं ते टीचर रखियो वियो। ऐं ॿी ॻाल्हि त असांखे उन्हनि इस्लामिक रिलीफ ॿियो बि आधार ॾिनई जे ॿिज बांधूं त असां उन में मीटिंग कई। उन में विहारे जेके ग़रीब माण्हू आहे त मुख़्तलिफ़ कंहिंखे ज़रूरत आहे, कहिड़नि माण्हुनि खे ज़रूरत आहे, उन्हनि ज़रूरतमंदनि खे ॿिज बांध बि इस्लामिक रिलीफ जे तरफ़ां असां वठाए ॾियारियो। To bring sustainable attitudinal change among communities, village and UC level community organisations were formed, strengthened and capacitated to lead the initiatives and create a sense of collective responsibility. Separate and joint community organisations for men and women were formed in each village to maintain gender balance across all activities. Specifically designed training was organised for office bearers of these community organisations that included sessions on conflict resolution, recognition of gender dimensions, investment planning, effective decision-making, advocacy skills, disaster preparedness and mitigation. Islamic Relief also supported the district government of Sujaul, provided them an early warning system to minimise the losses by flood in the future,
and linked the communities of 4 UCs with government for better coordination. मुंहिंजो नालो गुलाम मोहम्मद आहे। मुंहिंजो ॻोठ जो नालो कामिल ज़कीरिया इंगोरो आहे ऐं यूनियन काउंसिल जाती जो आहियां ऐं तेलको जाती ऐं ज़िलो सुजावल असांजो आहे। ऐं असां वटि हिते इस्लामिक रिलीफ 2010 खां वठी जेके बि कम कया आहिनि उन्हनि में असांखे जेको ही एमरजेंसी जो प्रोग्राम आहे आफ़तनि शामतनि खां बचण जे लाइ जेको ट्रेनिंगूं ॾिनियूं वयूं आहिनि ऐं उहे असांखे वधीक बहितर थियूं लॻनि त इहो कमु कंहिं बि इदारे न कयो आहे जेको असांजो ही इस्लामिक रिलीफ असांजो कयो आहे। ऐं असांजा पहिरीं हिन ते ट्रेनिंगूं थियूं, ट्रेनिंग खां पोइ पीपल असेंबली थियूं, पीपल असेंबली खां पोइ असांजा पॉलिसी डायलॉग थिया, पॉलिसी डायलॉग खां पोइ असांखे डायरेक्ट गवर्नमेंट सां राब्तो करायो जंहिंजी असांखे पहिरियां ख़बर न हुई त असांखे इस्लामिक रिलीफ जो मुंहिंजे ख़्याल में ई जेको कमु आहे सो सभ खां सुठो ऐं ॾाढो बहितर थियो। इंशाअल्लाह आईंदा इहे नुक़सान घटि थींदा। The operational aspect was led by these community organisations that worked on a variety of initiatives planned under the project. Some of the interventions for ensuring food security and livelihoods included scholarship programmes, micro-enterprise development grants, vocational grants, commercial vegetable production grants, value addition training, poultry distribution, business association formation training, and local economic development workshops. असांजे औरतनि खे वधि खां वधि फ़ाइदा पए था। इस्लामिक रिलीफ वारनि असांखे असांजे औरतनि खे सिलाई मशीनूं जा भर्त सेखारियो आहे ऐं कुझु हुनर अहिड़ा ॾिना विया आहिनि, कुल्फ़ी मलाई सेखारी आहे ऐं कुकड़ियूं ॾिनऊं, उन मां पाले हू पंहिंजो रोज़गार कनि पियूं। ऐं दुकान ॾिना विया आहिनि जिन दुकाननि मां जा उहे चीज़ूं विकिणी अॻिते हली पंहिंजा कारोबार करे, जीअं त मर्दनि सां हथु वंडाए अॼु असांजी पुठिते पहलू औरतूं हर मर्द सां पंहिंजो हथु मिलाए वंडाए ऐं ओतिरो ई कारोबार करे सघनि थियूं जेतिरो ई हुन असांखे ॾिनो आहे इस्लामिक रिलीफ वारनि जी महिरबानी जिन असांखे अॻिते आंदो आहे। To overcome the impacts of climate change and water scarcity problems in the area, climate change adaptation measures were put in place, and Islamic Relief Pakistan installed solar and windmills for water pumping, while hand pumps and sand filter water ponds were introduced alongside the rehabilitation of water supply schemes. Disaster risk reduction and climate change adaptation in these disaster-prone areas were supported through hazard, vulnerability and capacity assessment, HVCA, establishment of end-to-end community-level early warning systems, disaster risk management planning of the villages, development of response and contingency plans at village level, implementation of structural and non-structural mitigation measures, disaster preparedness at village level, formation of emergency response teams and provision of emergency relief equipment, as well as collection of the emergency revolving fund. Empowering citizens was one of the main areas of focus, and training was held for staff and communities to understand the process of engaging with governments. A number of policy dialogues were facilitated by Islamic Relief, where communities and government jointly planned to address the issues of the communities. जो नालो आहे जन्नत, जो ॻोठ जो नालो आहे रब नूं मालियो। असां पंहिंजे हक़नि जे लाइ असां कुझु पाण में मिली करे पंहिंजो ठाहियो वञूं ऐं कुझु असां ट्रेनिंगनि में हलिया आहियूं। तंहिंजे करे असां पंहिंजो शौर रखियो आहे ऐं माना ताक़त रखी आहियूं त असीं पंहिंजे हक़नि जे लाइ ॻाल्हायो बि था सघूं ऐं भले उहो इदारो हुजे जे भले सरकार हुजे पर असीं पंहिंजो ॻाल्हायो था सघूं। असां पंहिंजो ट्रेनिंगनि में सिखिया आहियूं, कुझु पढ़िया आहियूं, कुझु असीं ॼाणूं बि था, पंहिंजे अक़ल शौर ते असां पंहिंजो ताक़त करे रहिया आहियूं। त हिन इदारे ते असांखे ॾाढो माना ॾाढो असांखे शौर थियो आहे, ॾाढी ताक़त असीं करे विया आहियूं। एॾो ई इदारो इस्लाम रिलीफ इदारो असांखे सुठो लॻो आहे।